Uh, Assalamu alaikum ji. I welcome you to the second panel of today's discussion. And the panel basically talks about unlocking the economic, fiscal, and service delivery potential of local governments. दो चीज़ें before we start this panel. One is, unfortunately, today is Jummah, so we'll have to, we don't have the liberty as the first panel had of going beyond the time. So I'll request participants, especially for the first round of question, to limit their response to 5 minutes approximately, so that we can actually talk about other aspects of the conversation. We have a very esteemed panel with very divergent backgrounds that are directly linked to public and local government financial and fiscal issues. While starting this panel, I think I'd like to start with Miftah Ismail Saab. Miftah Ismail Saab is joining us online from Karachi. Assalamu alaikum Miftah Saab, welcome जी, आपने join किया. Other thing is ये लाहौर में हो रहा है, so the panel actually will be trilingual. So that goes without saying. Mr. Saab, I'd like to start with you, and my question to you will be, you have been 2 times finance minister, you have seen government up close, you have seen how the federal government is working, how the provincial governments are working, how the service delivery is in this country. So I actually have 2 questions from you. One is, what in your view are the things where we are lacking in terms of service delivery, like what are the causes? And second is, are these causes linked to some procedural or structural issues, or is it a question of our overall capacity as a state or society that we are facing these issues? Ali Saab, thank you so much, but can you repeat the first question? Yes. You said what are weaknesses? The first part is, since you have seen, especially the financial issues of this country at the federal and provincial level up close and personal, and the issues linked to service delivery. If you could pinpoint the fundamental issues that we have when it comes to service delivery and why the state is unable to deliver service to its citizens. Thank you, Ali Malik Saab. Bahut shukriya, and assalamu alaikum to the audience and to the panelists. And thank you for giving me an opportunity. Thank you to Ahmad Hassan Iqbal for giving me an opportunity, inviting me. देखिए गुजारिश ये है कि as an economist, I would say that things work on incentives. And are the incentives rightly aligned of policymakers? Are the incentives rightly aligned of legislators and bureaucrats who are responsible for service delivery? I would submit to you that in the current structure, our incentives are not rightly or correctly aligned. मैं आपको थोड़ी सी, मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी सेटिंग में आप हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बोर करता हूं और मैं आपको लेके जाऊंगा एक पब्लिक इकोनॉमिक्स के एक शुरू बहुत 1950 की दिहाई के एक इकोनॉमिस्ट थे चार्ल्स टीबो, जिन्होंने बात की थी लोकल पब्लिक फाइनेंस की और लोकल गवर्नमेंट्स की. तो उन्होंने कहा था कि लोकल jurisdictions are better because people can vote with their feet, so that if you don't like living in a particular district in Lahore, you can move to another district. That's one thing. But if there are small districts, they would compete with each other, and once their competition comes, that would bring about a good outcome. The economists here sitting in this audience know that whether you have a private sector company or a public sector company, a monopoly behaves the same way. आप किसी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में डाल दे, लेकिन अगर वो मोनोपोली होगी तो फिर भी वो सारे रेंट एक्सट्रैक्ट करेगी, उसकी कंज्यूमर सर्विस अच्छी नहीं होगी, उसकी सर्विस डिलीवरी अच्छी नहीं होगी, और तमाम वही मसाइल से वो भी मुंसलिक होगी जो मसाइल गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं. तो कोई चीज गवर्नमेंट में होने से खराब नहीं हो जाती, अच्छी इसलिए होती है चीजें कि वो कंपटीशन होता है, मार्केट का जो इनविजिबल हैंड होता है वो कंपटीशन का वो फोर्स करता है. हमारे यहाँ 4 सूबे हैं और एक वफाक है. आपकी 18वीं तरमीम से पहले वफाक वाज द हेजेमॉन, वफाक हैड ऑल द पावर्स. 18वीं तरमीम के बाद आपने पावर्स डिवॉल्व कर दिए सूबों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वफाक ने अपनी वर्कफोर्स कम नहीं करी, वफाक ने अपनी चीजें कम नहीं करी, वो एक अलग बहस है.
लेकिन सूबों ने भी फिर आगे, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, इफ यू लिविंग इन लारकाना यू नॉट गोइंग टू मूव टू चारसदा फॉर इंस्टेंस इफ देयर आर बेटर टैक्सेस. So one of the things that people talk about is small local governments with taxation power and spending powers that can improve service delivery, not out of the goodness of their heart, but because of competition. Otherwise, they would lose voters who, stuff like that. एंड ऑल्सो जब छोटे छोटे जोरिस्डिक्शन होते हैं तो इलेक्शंस के अंदर भी आप वोटर्स जो है उन लोगों को निकालने में उनके लिए आसानी हो जाती है. और जहां पे हमने देखा है कि फेडरलिज्म के एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, अमेरिका में मिसाल के तौर पर बड़े अच्छी सर्विस डिलीवरी होती है और फेडरलिज्म के निज़ाम अच्छे हैं. वहां पे देखें कि बहुत सारे जो पावर्स होते हैं वो स्टेट्स के पास होते हैं, उससे बहुत ज्यादा पावर्स फिर काउंटीज के पास होते हैं जो हमारे डिवीजन के बराबर हैं, और उससे बहुत ज्यादा पावर सिटीज के बराबर होते हैं या टाउनशिप्स के बराबर के साथ होते हैं. सो अगर हम भी ये पावर डिवॉल्व कर दें तो आसानी हो जाएगी. जस्ट टू जो मैं गुजारिश करना चाहता था कि यहाँ पे मैंने 2 मरतबा एमएनए का इलेक्शन लड़ा है. तो जब आप एमएनए का इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो भी वो आपसे कोई ये नहीं पूछता कि भाई 18वीं तरमीम का क्या हुआ या एक्सचेंज रेट का क्या हुआ. वो आपसे पूछते हैं सर हमारे गली में नाला नहीं है, हमारी गली में गटर नहीं है, हमें पानी नहीं मिलता, हमें गैस नहीं आती, हमें बिजली नहीं आती. दीज आर द क्वेश्चंस दे आस्क इन कराची, these are the questions they ask in Lahore, these are the questions they ask everywhere. So the MNAs are asked the same questions, MPAs are asked the same questions, your ward councillors are also asked the same questions, and your UC chairmen are also asked the same questions. So then the MPAs, for instance, don't want to devolve this responsibility to ward councillors because this is what they're doing. सो वो उनको नहीं देते, वो सारे पैसे अपने पास रख लेते हैं. हमने ये देखा है कि दिस इज इनवेरिएंट टू अ पॉलिटिकल पार्टी, whether it is PTI, whether it is PMLN, whether it is People's Party, nobody but nobody devolves power to a level down. And yet we know from theoretical reasons and also very good empirical proof that countries are able to do service delivery only when they bring down the delivery of services. If you look at companies, FMCG companies, whether they're based in Karachi or Lahore or elsewhere, they will have territory sales manager in every area. They will have salesmen in every mohalla in Pakistan. So they don't sit in Lahore or Karachi and call people, shopkeepers on the phone to get orders. They actually have people on the ground. We are not doing that. So we have to do this. Just think about this कि लाहौर में ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, वो अटक से लेके रहीम यार खान तक स्कूल चलाए, वो कैसे हो सकता है? सो मेरा ये ख्याल है कि स्टेट्स की जो प्रोविंसेस की हमारे यहाँ जिम्मेदारी होनी चाहिए वो रेगुलेशन की होनी चाहिए कि हेल्थ रेगुलेशन क्या है. एजुकेशन के चले आप हेल्थ एंड एजुकेशन के आप चाहें तो वफाक में भी दे सकते हैं मिनिमम सिलेबस स्टैंडर्ड्स, लेकिन स्कूल्स के टीचर्स क्वालिफाइड हैं, उनको लाइसेंसिंग देनी है. अगर आपने कोई वेपन्स के लाइसेंसेस देने हैं, अगर आपने दीगर लाइसेंसिंग का जो काम है वो स्टेट का होना चाहिए या प्रोविंस का होना चाहिए. लाइसेंसिंग का काम कि शॉप्स जो है वो अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, मिनिमम वेज सही है वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस. उसके नीचे का जो काम है पुलिस की जिम्मेदारी है, वो डिवीजन की होनी चाहिए, वो वहां पे काम होना चाहिए. असल में जो टैक्सेशन होना चाहिए वो प्रॉपर्टी टैक्सेशन जो है वो तीनों लिस्ट बांटें, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट तक लेके जाना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको ज्यादा पता है कि किस तरह प्रॉपर्टी करनी है. हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा टैक्स आना चाहिए जिस पैसों जिस मद में, वो प्रॉपर्टी टैक्स है, लेकिन हम उधर से टैक्स नहीं लेते क्योंकि हम अमीर लोगों से टैक्स लेने में डरते हैं. सो प्रॉपर्टी टैक्स तक वहां तक जाना चाहिए. और जो एनएफसी अवार्ड के आप पैसे दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो भी 60% आपको डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्टली देना चाहिए, 20% आपको डिवीजन को देना चाहिए, और सिर्फ 20% एक सूबों को देना चाहिए जिसमें वो रेगुलेट करें. ठीक है, उसको अपना अगर प्रोविंशियल इनकम टैक्स जमा करना है तो जरूर करें, लेकिन उसको आप रेगुलेट करें. फिर सूबे का काम होना चाहिए फॉर ओवरऑल रेगुलेशन. एंड जो बेसिक डायरेक्ट सर्विसेज हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करना, police service provide karna, health service provide karna, this should be divided between districts and divisions, and that I think will improve service delivery. मिस्टर साहब, थैंक यू सो मच. आपने भी बहुत क्रिटिकल बात की रिगार्डिंग द टैक्स कलेक्शन. सो मैं अब्दुर्रहमान साहब की तरफ जाऊंगा और अब्दुर्रहमान साहब से पूछूंगा कि इन हिज व्यू what are the deficiencies in our overall tax collection system in terms of efficiencies, and particularly one of the most critical aspects of tax collection, which is around the property and land use taxation.
Where can we improve that? What are the challenges that we face? Where have we gone wrong in that? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया यहाँ पे अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए। टैक्सेशन में मैं मिफ्ता साहब से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ जनाब कि लोकल गवर्नमेंट्स के पास जो टैक्सेशन के इख्तियारात हैं या जो होने चाहिए, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्नर लोकल गवर्नमेंट्स के लिए हो सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स की जो मौजूदा पॉलिसी है, ज़ाहिर है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही इस लेजिस्लेशन करती रही है, तो इसमें बहुत से बायसेस यकीनन हैं। और डॉक्टर अली चीमा के साथ मिल के मैं जब पंजाब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था और फैसल रशीद साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो काफ़ी इस पर रिसर्च भी हुई कि कुछ पॉलिसी बायसेस हैं जिनकी वजह से शायद इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को जिस तरह से हमने डिज़ाइन किया हुआ है, और इसका पूरा पोटेंशियल भी हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। जो इसकी कलेक्शन होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही, तो ये डबल वैमी का हम शिकार हैं। और हमारा इस पे काफ़ी कंसेंसस था कि अभी जो मौजूदा प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम है वो लैंड को कम टैक्स करता है और कंस्ट्रक्टेड एरिया को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स लगाता है। और हमारा ये ख्याल था कि इससे इकोनॉमिक इंसेंटिव्स डिस्टॉर्ट होती हैं और लोग डिस्करेज होते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे उनकी टैक्स लायबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी। डॉक्टर अली चीमा ने हमें ये भी बताया कि दुनिया में जो टैक्स एफिशिएंसी के जो असूल हैं, लैंड टैक्स गालिबन सबसे एफिशिएंट टैक्सेस में शुमार होता है, क्योंकि लैंड की जो सप्लाई या क्वांटिटी है उसको इतनी आसानी से आप बढ़ा या घटा नहीं सकते, उसको छुपा भी नहीं सकते। तो एक तो गवर्नमेंट्स को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि उन्हें लैंड के ऊपर टैक्स को बढ़ाना है और जो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है उसके ऊपर टैक्स को कम करना है। इसी तरह एक और बायस जो हमें पॉलिसीज़ में नज़र आता है वो ये है कि जो रेंटेड आउट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा है उन प्रॉपर्टीज़ की निस्बत जो रेंटेड आउट नहीं है। उसकी वजह से भी हमारा ख्याल है कि रेंटेड प्रॉपर्टीज़ की सप्लाई जो है वो अफेक्ट हुई। हाई टैक्सेशन की वजह से लोग डिस्करेज हुए हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ को अव्वल तो कंस्ट्रक्ट ही कम करें और अगर करें तो उसको ज़्यादा रेंट आउट ना करें। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिसी बायसेस हैं जिनको अगर हम दुरुस्त कर सकें तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। दुनिया के कुछ जो ममालिक जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स में ज़्यादा अच्छा काम किया है उनकी जब हम मिसाल लेते हैं तो वो इसको वेल्थ टैक्स की तरह भी किसी हद तक इसको ट्रीट करते हैं। तो आपकी ज़रूरत की जो प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह रहे हैं उसके बाद जब आप मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टैम्प ड्यूटीज़ भी बढ़ जाती हैं और जो प्रॉपर्टी टैक्स का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी पॉलिसीज़ अगर हम फॉलो करें, हमारा ये ख्याल है कि जो अभी मौजूदा प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन है इससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है और उसका बोझ भी ज़्यादा जो मुखय्यर तबका है, जो ज़्यादा निस्बतन वेल्दी सेगमेंट है सोसाइटी का, उन्हीं के ऊपर आएगा। प्रॉपर्टी के अलावा बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो जिसकी ओनरशिप प्राइवेट हैंड्स में नहीं है, जिनकी मलकियत लोकल गवर्नमेंट्स के अपने ही पास है, हमारा ख्याल है कि उनकी मैनेजमेंट भी बहुत बेहतर की जा सकती है। लोकल गवर्नमेंट्स के पास आम तौर पे बहुत सी लैंड और बिल्डिंग्स होती हैं जिनको उन्होंने रेंट आउट किया होता है, मगर उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। हमारा ये ख्याल है कि अगर इस पूरे रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ किया जाए और कॉर्पोरेटाइज़ किया जाए उस इदारे को जो इसको मैनेज करता है और उसकी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और टारगेट्स अगर सेट किए जाएं तो जो असासे लोकल गवर्नमेंट्स के पास हैं उनसे वो खासा ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पार्किंग अगर हम देखें तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में उन्होंने पार्किंग फ़ीस को एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना लिया है। उससे वो बहुत सा सरप्लस जनरेट करते हैं जिससे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बहुत सी और सर्विसेज को सब्सिडाइज भी कर लेते हैं और उसका ये फ़ायदा भी है कि उससे आप एनवायरनमेंट जो है उसको भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये भी हमारा ये ख्याल था कि पार्किंग की जो पॉलिसी है, पार्किंग फ़ी की, इसको भी हमें रिव्यू करना चाहिए और इसको एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी देखना चाहिए और एज एन एनवायरनमेंट पॉलिसी टूल भी हमें देखना चाहिए।
और उसके साथ साथ ज़ाहिर है हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना होगा। आखिर में मैं सिर्फ ये एक बात कहना चाहूँगा कि जो प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग, अर्बन और टाउन प्लानिंग, उसका डिज़ाइन भी बड़ा अहम है। अगर आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं है और आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि ऑप्टिमल साइज़ क्या होना चाहिए आपके शहरों का और आपके कस्बों का, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी ऑप्टिमल है आपके लिए, तो फिर अगर आपके पास वसाइल हैं भी फिस्कल और अगर आप टैक्स कलेक्ट कर भी पा रहे हैं मगर आप वो सारी सर्विसेज शायद ना दे सकें, तो हमारे शहर और कस्बे हैं, जब भी हम उनके बारे में प्लानिंग करें तो हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि जो सर्विसेज की कॉस्ट आएगी पर यूनिट बेसिस पे वो क्या आएगी और हम उसके साइज़ को और पॉपुलेशन डेंसिटी को उसके मुताबिक टारगेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। Thank you, Ji. Very enlightening insights into the issues linked to taxation, especially land use and other urban policy issues. Next, I'll move to Dr. Ali Chima. Dr. Ali Chima, you have been involved with the structuring of 2 PFCs in Punjab, and you have also seen the resource distribution. You have been very instrumental in formulation of local government acts as well. सो आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके ख्याल में in that process the theory of PFCs as well as the practical aspects, where do the process lack or the implementation lack which is causing poor service delivery to the citizens, and which is actually hampering the relationship that we have between the state and the citizen, which is paramount in this whole equation. Thank you, Ali, for putting me on this panel. I think हमें एक step पीछे लेना पड़ेगा. I think we need to structure this debate. I mean, there is, मैं पहले panel में भी सुन रहा था, there's some truism कि local governments are a panacea. यानी कि आप local government set कर देते हैं तो फिर नहरें शहद वाली बहनी शुरू हो जाएंगी. But actually, if you look at the evidence, जिन लोगों ने देखा है कि local governments कैसे perform करती हैं, so you have local governments which do really well, and then you have local governments that fail completely, right? So I think that's important. The issue is not whether you set up a local government system. जो मैंने जिस बात से ये सारी dialogue शुरू किया था कि उसकी design क्या है. Now, if you look at successful designs, and मेरे साथ Miraj बैठी हुई है, who's done a lot of work on this, much more than me, and I'd love to hear her. I've learned a lot from her. The one big transformation that local governments brought was in 19th century US and UK and Europe. जो सबसे बड़ी दुनिया में mortality drop हुई, यानी कि इंसान की जो उम्र बढ़ी, वो मेडिसिन से नहीं थी, वो गोलियों से नहीं थी, वो साफ पानी से और मॉडर्न सैनिटेशन से थी. इससे जो अगर आप मोर्टालिटी ड्रॉप देखें तो बाय द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी जो थी इंसान की उम्र जो थी वो दुगनी हो चुकी हुई थी. इसके पीछे क्या था? इसके पीछे थी वेरी इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स. यानी यूएस, यूरोप और यूके ने अपने गंदा पानी और ये मसला 19 सेंचुरी के आखिर में ख़त्म कर दिया था. अब सवाल ये है कि वो जो लोकल गवर्नमेंट का डिज़ाइन था जिसने इतनी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो किसी सियासी पार्टी की बेनिफिट नहीं थी, वो इंसान के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन थी. क्या वही डिज़ाइन है जो हमने और पोस्ट कॉलोनियल मुल्कों ने अडॉप्ट की? और उसका जवाब है नहीं. और ये हमारा मसला नहीं है. हिंदुस्तान कोई सक्सेस नहीं है लोकल गवर्नमेंट, डिस्पाइट द 72nd and the 73rd amendment. Africa, where there has been a big movement towards local government reforms, mostly those local governments are delivering dysfunctional outcomes. उनका डिज़ाइन और जो यूरोपियन ट्रांसफॉर्मेशन का डिज़ाइन था वो बिल्कुल फ़र्क था. उसमें बुनियादी फ़र्क क्या है वो समझने वाली बात है. हमारी जो लोकल गवर्नमेंट सेटअप हुई हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं. और सबसे पहला हाथ आपने क्या बांधा हुआ है कि आपने 2 किस्म की लोकल गवर्नमेंट सेटअप की, या आपने, अब मैं पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ बट ये हिंदुस्तान में भी यही है, अफ्रीका में भी यही है,
आपने रूरल एरियाज में लोकल गवर्नमेंट सेटअप की जिनके पास कोई टैक्सेशन बेसिस ही नहीं है, जिला काउंसिल्स के पास कोई रेवेन्यू का सोर्स ही नहीं है, लेकिन आपने उनको एक लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ फंक्शंस दे दिए। आपने कहा वो ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगी, पैसा कहाँ से आएगा? पता ही नहीं जी, पैसा तो है ही नहीं। इफेक्टिवली क्या होता है, आप ये कहेंगे कि ये निज़ाम जो है वो डिप्टी कमिश्नर सूबे के बेसिस पे चलाएगा। सो एक वो लोकल गवर्नमेंट्स हो गए, उनके हाथ बंद गए। अब वोटर, मैंने बड़ी बातें सुनी कि आप इलेक्शन करा दें, ये कर दें। वोटर एक आदमी को वोट दे रहा है जो इस चीज़ का जिम्मेदार है कि वो उसको 100 चीज़ें प्रोवाइड करे, लेकिन उस सिस्टम में उस आदमी को पैसे नहीं मिल रहे। तो जब वोटर उसके पास जाता है और वो कहता है कि यार आपने ये काम नहीं किया, वो कहते हैं जी हमारा तो कोई कसूर नहीं है, तो सूबे ने पैसे रोके हुए। तो वो कहता है मैं अब क्या करूँ? वो कहते हैं जी आप MPA के पास जाएं या आप MNA के पास जाएं। तो आपने बाय डिज़ाइन जो नाजिम है उसको MPA और MNA के सबऑर्डिनेट किया है। और वो बाय द वे मिफ्ता साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, बट चाहे अब डिस्ट्रिक्ट पे लोकल गवर्नमेंट्स बना दें, चाहे डिवीजन पे बना दें, अगर ये बुनियादी डिसफंक्शन आप नहीं हल करते तो वो फिर भी ताबे रहेगी उस गवर्नमेंट के जो पर्स स्ट्रिंग्स कंट्रोल करती है। शहरों में हमारे यहाँ एक टैक्स बेस है जिसकी अब्दुल रहमान साहब ने बात की, विच इज़ द अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स। यूरोपियन ट्रांसफॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल था। मसला क्या है कि वो टैक्स सेटिंग पावर्स, टैक्स वैल्यूएशन पावर्स, वो सारी चीज़ें जो उस सिस्टम में से रेवेन्यू निकालता है वो सूबे ने अपने पास रखी। दूसरा ये काम है कि आपने अगेन लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ फंक्शंस दे दी, बट साथ आपने स्पेशल एजेंसीज बना दी, आपने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बना दी जो एक्चुअली सूबे की भी ताबे नहीं हैं, वो अपने आप के ताबे हैं, राइट। और आपने एजेंसी, वाटर एजेंसीज बना दी, आपने कंपनीज बना दी, आपने सारा अर्बन निज़ाम जो है उसको फ्रैगमेंट कर दिया। देयर इज़ नो इंटीग्रेटेड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन साउथ एशिया। मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं कर रहा, इन साउथ एशिया। अब अर्बन एरियाज में और मसला है, वो वोटर जाके कहता है, कराची की मिसाल है, सो आप ले आए कल कराची में एक फंक्शनल लोकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ले आए, वो यही डिलीवर करेगा। बिकॉज जब बंदा जाएगा वो कहेगा कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, वो कहता है जी क्यों पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स तो आपका टैक्स है, वो कहता है कि जी वो तो प्रोविंस ने सेट करना है सारा कुछ। फिर वो जाएगा, वो कहेगा कि जी आपने ये चीज़ नहीं दी, वो कह दीजिए प्रोविंस ने जो कलेक्ट भी करा है उसमें से सिर्फ मुझे 20% दिया, मेयर ऑफ लाहौर यहाँ पे नहीं है। हम जब PFC में थे उनका रोना ये था कि लाहौर के प्रॉपर्टी टैक्स में से उनको सिर्फ 40% मिलता था। क्यों? बिकॉज बाकी वो सारा प्रॉपर्टी टैक्स जो था वो वासा के पास चला जाता था और कंपनीज के पास चला जाता था उसको सर्विस करने के लिए। अब इस डिसफंक्शनल निज़ाम में एक तो ये मसला है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जिसको हम फिस्कल अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। दूसरा जो मसला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, कि इवन इन अर्बन एरियाज जहाँ पे ये टैक्स है, आप टैक्स रिकवर नहीं कर रहे। सो दिस सिस्टम बिल्ड्स डेफिसिट्स। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लाहौर में वाटर, सैनिटेशन, ये मेट्रो सिस्टम की सब्सिडीज पे जो एक्सपेंडिचर लगता है वो 40 बिलियन रुपए है इस क्वालिटी ऑफ सर्विस पे। अभी हम ये बात नहीं करें कि क्वालिटी ऑफ सर्विस आप बेहतर करें। द टोटल प्रॉपर्टी टैक्स दैट द सिटी ऑफ लाहौर कलेक्ट्स इज 6.5 बिलियन। तो उसमें आप थोड़े यूजर चार्जेस लगा दें, वो भी नहीं लगाते वो। सो यू हैव बेसिकली ऑल दीज थिंग्स रनिंग ऑफ डेफिसिट्स। योर कराची वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज रनिंग ऑन अ डेफिसिट, your Lahore waste management system is running on a deficit, right? अब आगे कैसे जाएं? And that's where if you look back to the US or Europe in those days, the important thing to realize is these were governments that, by the way, did not have necessarily very radical devolution. Remember in England से ज़्यादा बड़ा unitary state नहीं है. It's the most centralized state you can think of. But even over there, the transformation happened through local governments. Why? Because those local governments had a limited set of functions, but they had equivalent tax bases, and then they were made accountable electorally. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. Between 1900 and 1930, 40% of total taxes in the UK and 60% of the US were local taxes, where there were taxes that were collected through local governments.
the amount of transfer local government के budgets में और revenues में इस time period में UK और US में was less than 10%. यानी कि 90% वो अपना revenue खुद इकट्ठा करते थे. पाकिस्तान में आपकी लोकल गवर्नमेंट्स इन टोटल 5% रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं, 95% वो ट्रांसफर पे डिपेंडेंट. तो हम क्या बातें करें, हम ये कि इलेक्शन करा दें, ये कर दें, डिवॉल्व कर दें, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला अनलेस आप ये जो बुनियादी डिसफंक्शन है, विच इज़ बाय द वे एट द हार्ट ऑफ द सर्विस डिलीवरी प्रॉब्लम. Because I actually, my heart bleeds for a Nazim or a mayor or whatever you want to call it, because that guy's hands are tied or that person's hands are tied, basically. वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके finances आपने रोके. So I think that that's where the fiscal story comes in, and I think the 18th Amendment had a problem. It did not envisage the fiscal side at all, the taxation side. There was no rethinking on the taxation side. So it wasn't that deliberated, and I don't blame them because it came from a very different ethos. But constitutional development is an evolutionary process. The parties have to sit down and they have to say, how do we take this forward? इसके बगैर आप major infrastructure नहीं change कर सकते. ये भी आपको बता दूं, मेराज इस पे ज़्यादा बात करेंगी, that the major transformation of water and sanitation happened through municipal bonds. Basically, local government bond देती हैं और वो credit raise करती हैं. आपको पता है कोई फैक्ट्री अगर क्रेडिट रेस करती है, किसी इनकम के अगेंस्ट रेस करती है ना, हवा में तो नहीं रेस करती. वो इनकम क्या है लोकल गवर्नमेंट की? वो प्रॉपर्टी टैक्सेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन है. अगर आपने एक फैक्ट्री की इनकम सोर्स ही बंद की हुई है तो वो पैसा कैसे रेस करेंगी टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर network expansions? So I don't think the PFC, I'll come back, I mean, I'll let Faisal talk about the PFC, but I think this is the basic, the fiscal devolution being at the heart, and the human capital devolution, जो इशरत साहब वगैरह, फवाद साहब जिस पे बात, उमर बात करेंगे. Those are the two things जिस पे we have seen no change. There's so many laws that have come with distinctions, but not every one of them has been silent about these. And I'll stop there. Thank you, Dr. Ali Cheema. So I'll move to Faisal Saab. Ali Cheema Saab has given me a cue on that. So Faisal Saab, first is if you could talk about some of the issues that were summarized by Dr. Ali Cheema, and then if you could give your inputs, as you have been part of the process of PFCs and on public finance, you have a very compelling grip on the subject. So if you could talk about some of the things that need to be done to basically make this whole service delivery thing in particular more efficient. Of course, it is linked to the fiscal side as well, as Dr. Cheema talked about. But if you could particularly focus on how we can enhance service delivery through some of the key takeaways, maybe from some comparative country analysis. Thank you, Ali, and thank you, Cheema Saab, sir. I think it's a pleasure to be here. I'm honored to be part of this panel comprising people like Dr. Miftah, Dr. Ali Cheema, Madam Miraj. I think I'll like to share the experience that I have. We have worked together on 2 PFC awards, and this experience actually comes from that. But before saying that, I think सबसे पहले हमें क्योंकि कुछ यंग पीपल भी यहाँ पे बैठे हैं, तो दे जैसे डॉक्टर अली चीमा ने कहा कि शायद रेवेन्यू की अवेलेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई टोटली अग्री विद दैट. अगर लोकल गवर्नमेंट्स के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो वो सिंपली दे कैन नॉट परफॉर्म, एंड दिस इज़ ओनली वन पार्ट of the system that we need to have in place to enable local governments to deliver the services that they are sort of mandated to deliver. So being somebody who works in the area of public finance, let me tell you that having revenue is only one step, only the first step. You need to have, a very strategically planned budget to be in place. That budget has to be provided to sort of different local governments and different tiers of government in an equitable manner. That resource that then reaches to these service delivery units, that has to be spent in an efficient and effective manner.
अगर ये सारे स्टेप्स सही तरह परफॉर्म नहीं होंगे, किसी एक जगह पे भी हमारी ये चेन टूट जाएगी, तो शायद सर्विस डिलीवरी की प्रोविज़न नहीं हो सकेगी। सो अगर हम लोकल गवर्नमेंट्स का एक इफ़ेक्टिव सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि हम उसके लिए काफ़ी ग्राउंड वर्क भी करें। मतलब आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड दैट द विलिंगनेस और पॉलिटिकल विल टू डू थिंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, but we have seen that capacity issues and lack of systems and processes also plays a lot of part. So अगर ये चीज़ें इन पे अगर हम काम करें, I think that's where this debate is very very useful, and I like this structure कि पहले स्ट्रक्चर में हमने फॉर्म और स्ट्रक्चर पे बात की पहले सेशन में, दूसरे सेशन में हम फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं, तीसरे सेशन में हम वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन and how can that be improved at local government level. So these three things are linked, so the structure is really nice. So when you establish local governments, अगर आपने कुछ फंक्शंस दिए हैं, तो चीमा साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें उसके लिए सफिशेंट पैसे देने हैं। अब वो रिसोर्सेज उन्हें टैक्स बेसिस असाइन करके भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जिन इलाकों में वो टैक्स बेसिस इन्वॉल्व नहीं होंगी, यानी जब हॉरिजॉन्टल एक्विटी के इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे हमें फिस्कल ट्रांसफ़र सिस्टम को लाना पड़ेगा। और वो फिस्कल ट्रांसफ़र सिस्टम किस चीज़ पे बेस्ड होगा? वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कितना पैसा एक टिपिकल लोकल गवर्नमेंट को लगता है टू परफॉर्म दो सर्विसेज। इसके बाद जब आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर नॉर्म्स और यूनिट कॉस्ट्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, अ लोकल गवर्नमेंट शुड हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी, then you need to estimate the fiscal capacity of that local government. हमारे यहाँ अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट्स बनाते हैं, तो हर एक की कैपेसिटी इवन विद इन अ डिस्ट्रिक्ट वुड बी वेरी डिफरेंट। देयर कैन बी वन एरिया which can be very rich in property tax, and there could be another one which has no potential for property tax. So that gap has to be filled through the provision of these fiscal transfer systems, and that has to be predictable for the local governments to plan service delivery in a longer term, even if they have the capacity. So these things have to be in place. And when we start to work in this area in Pakistan, we come across many hurdles. So if you start designing a fiscal transfer system, even if you talk about the designing of the National Finance Commission Award at the federal level, you hit this problem that you don't have expenditure norms developed in this country. So how do you find out, what amount of resources are required by a local government? Similarly with a provincial government, if you go back and ask somebody who worked at the federal level, knows about the design of the National Finance Commission Award, you would see that this technical work was lacking behind the design of the award. As Chima Saab said, the other flaw of course was that a devolution of additional share was done to provincial governments, लेकिन उनके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगाई गई कि उन्होंने खुद कितना कंट्रीब्यूट करना है। So that contributed sort of created a moral hazard for provincial governments कि वो अपना revenue चाहे ना भी collect करें, they will get a lot of resources. They have important tax bases to deliver, and in today's situation, I think provincial governments have to play a very important part in increasing the size of the pie or the revenues for the governments in Pakistan. अच्छा, इसके बाद अगर आप कहीं से कोशिश करते हैं कि आप लेट्स से बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, पास्ट एक्सपेंडिचर, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट हैज़ बीन स्पेंट इन द पास्ट टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, then the next problem is that you are not aware of the fiscal capacity of different units of local governments, and that becomes another difficult task, and that is, I think, that is made more difficult by the fact that each time we have a new local government system, the unit of local government is different. And in the service that you conduct, through which you actually collect a lot of service delivery data, the unit of collection of data in those surveys is different each time. And they do not conform to the structure or the form of local government system that we have. So I think it is really, really important that if we have to design good systems, we have to let a system perform. We have to do a lot of sort of back of the office work to really be ready to design a good fiscal award. I think another issue that many people have, I think, hinted at previously is that yes,
the provincial governments are not really willing to transfer resources. And one of the reasons that they use is that if we transfer more resources to local governments, it would be wasted. So, why is that? That concern could be raised about provincial governments as well when you are designing a National Finance Commission award. But since this is really in the control of the provincial politicians, they use that as a pretext for not transferring resources. So whenever I think there is a design of a local government system, it has to come with sort of performance targets, performance grants for local governments, and also for with very robust PFM systems. I think we need to have a system जहाँ पे उनकी accounting और reporting बहुत strengthened हो, उनके internal controls बड़े अच्छे design हो, वहाँ पे regular audits होने चाहिए, चाहे वो commercial audits करवा के जल्दी करवाने पड़े, but we have to have a system to do that. Otherwise, I think politicians will have this pretext and they will not transfer resources to local governments. So I think anybody who is starting that debate, who wants to work in this area, should know that there is a lot that needs to be done in terms of building capacity, building processes, building systems, before we can actually really start to move towards an empowered sort of fiscal system in local governments in Pakistan. Thank you, sir. Thank you, Faisal Saab. And I'll now move to Mehraj. Thank you so much for making it on such short notice. And we are actually delighted to have you here. I am a big fan of your work on post-colonial local government failures, to put it simply. And you actually have a lot of experience in structuring and making more efficient the local government systems in United States. Which is, I mean, in many ways, a benchmark for local governance in the world right now. But I'll ask you two questions, and then if you feel like commenting on some of the other stuff that has been happening here. First is, Faisal Saab actually has talked about the revenue generation capacity of various areas. So in your view, should the districts or the local government units be defined on economic ecosystems, or should it work the other way around and we should let the market determine how things progress on those directions? And second question, which is actually very close to my heart personally, is I mean, in 21st century, it's a century of mega cities, and they are actually becoming a very critical element of economic progression of any state. In fact, we are seeing some city-states becoming the benchmark of prosperity and modernity and development in this world, even for the greater powers. Do you think there is a case for having a separate administrative/political structure for the two mega cities that we have, which is Lahore and Karachi? I'll leave this with you, and please. There's a lot to discuss. I don't know where to start. I'm so pleased that this happened, and I found out about it, and I was able to connect with Ali. So I just want to let you know that recently an article of mine came out in the PIDE's Discourse magazine. In it I tried to cover the history of local government, and I also in it explained that our local government system is basically reflects two eras of local government in England. They are incompatible with each other, and they're both inadequate, you know. And also, how do you manage the systems? Now, the urban model actually has a lot of similarity, which I mentioned here, with the United States. And that is because in America, New York copied a particular era of local government in United Kingdom. And this happened because New York already had a financial base, and the major investors in United States have been the financiers, the British financiers. And when we talk about the improvement of local government in the 19th century, they was driven basically by urban industrialization, you know, industrialization. And what happened was,
Well, the financiers, the owners of the East India Company, I feel, they robbed India, you know, and then they developed United States, robbing us. But it's very interesting because why did the British local system, you know, they modernized it because what was happening was because of the steam engine, you know, and the steam was near the water source, so the urbanization was happening in rural areas. And the system that they first started creating these improvement districts, which were like these sewerage board, you know, but as it became more urbanized, it became more confusing to manage. So they looked around and they found that the French model worked better. So they went from fragmentation to integration. So if you look at our urban model, it's fragmented. And the French model is integrated. Now, when they copied the French model, maybe they were enemies, so they didn't quite do it right. So the French model at that time, 1789, had 3 tiers. So they had the district, what they call the département, which is the county level. Then they had the middle level, which is our tehsil level. And then they had the local government level below that, what they call the commune. Now, the middle level had no government powers whatsoever. So, and then they had 80 counties, and they had over 38,000 local governments. So those counties could not manage, you know, those 38,000. So it's very interesting because the French have become the trendsetters in local government modernization in the Western world. And all countries are sort of behind France in different stages. In the English-speaking countries, the most modern systems are in Canada. And it's really interesting because the 3 most populous provinces of Canada have the 3 most evolved systems, and they all are reflected in France. You know, so you have British Columbia, which focuses on service sharing, which the French started in 1890. That was a first improvement from what they had in 1789. When the British copied the French system, they didn't have that 1890 improvement, which was service sharing between the localities. Then you have Toronto, Ontario, where you have large city and its periphery together in one system. The French have that. Then you have Quebec, where they have decentralized cities. They have the large cities and their peripheries, which is Montreal and another city. So the urban community, that the French have that. So the French has all of that in their system, and it's a network system. Now, coming back to the United States, you know, when I went to the States, I went for college. I ended up by chance in municipal finance, and it was the largest, #1 law firm in municipal finance in the country. So as a result of that, it was just like a whole new world, and I was so fascinated by it. But the thing is, different states in America have different rules. And when I thought America was very advanced. Now I've come back and said, no, it's kind of not advanced. And there's a lot of resistance to change there. And when we're talking about property tax, I'm not really, I think property tax is really, because it's not an income earning tax. You know, it's only an income earning if you have a business out of your home or if it's commercial real estate. Otherwise, it's a proxy for income tax. And it's created wrong incentives in the United States. So what's happened is that I think I make a joke and I say the D in United stands for decay. And what is happening is that the developers are building these houses which are very flimsy and they don't age well. And so the people, rather than fixing their houses, they move on to a new house. So it's, and then this area loses its tax base. So the America is really sort of as a decay that's spreading out from the cities, from the suburbs. And the amazing thing is the only 2 people who are really talking about it, because everyone is vested in this property tax system, you know. And one is Tom Beer, who talks about it. He's based in Ohio, and he's saying that these counties around the city are just decaying, and something must be done with this problem. The other one is someone in Minnesota,
and he is saying that they just don't have the tax base, for the municipal finance. So now, so I basically think that, and the other thing is there's a professor in California, University of California, Santa Cruz, who is looking at what in the cities are the major coalitions. And the one that's the most powerful coalition is the land and buildings. Acha. There is a book somebody wrote about New York, and the book says The Assassination of New York. And basically what it is these real estate people, they got rid of the manufacturing. Now people are talking about New York has lost a lot of its revenue because these people are working from home, and they have all these offices which are going empty, and people are giving up their office buildings, and it's become a major crisis for New York City. In my article, I mentioned New York City because I say that New York City system is very similar to the cities in our system. This was the first one, New York basically, and the other states sort of picked up parts of what New York has. And in New York, the state controls development and transportation. The two most important things of urban government. And that's what's here. The province controls development, and the only difference is that we have like these. Each area may have its own development authority, whereas in New York it's the Empire State Development Corporation. And the transportation, the suburbs. There you have the subway system. MTA is controlled by one. And then you have the bus transportation and the airports and the tunnels controlled by another state agency. So, but that's actually a bi-state agency between New Jersey and New York, the Port Authority. So sorry, going back to the, could you repeat your question? Yeah, so, This is so much to so first question basically is there a case for redrawing districts based on economic ecosystem, or shall the market take its course? And other more important question is, for the mega cities of Lahore and Karachi, is there a need for a separate administrative structure? The thing is that I'm really, the country that manages megacities the best is China. Okay, China, I think, has the most evolved, advanced local government system in the world. Nobody wants to admit it, but it does. But the thing is that China's, what China has is that it, and the reason it did it was economic, because they noticed that FDI was clustering. And they decided they wanted to support clustering. So originally what they created was a Yangtze River Delta. They got all the provincial governors together. They got the local leaders together, and they said, sort of explained to them that they want to have an integrated system. So, and then the interesting, and then after that was the Pearl, so that's what they started as their base. But now the most recent thing they talk about, next step is city clusters. So when they talk about city clusters, the cities in China are collections of local government, collections, So, the city clusters are basically collaborative systems of these collections of local government. So it's very interesting for me to see that China and France have the two most similar local government systems in the world. They started in completely different times, and they have ended up going in the same direction, completely different history. And why is it? Because when you have a certain kind of structure, there seems to be certain logic in evolution. So they both have vertical systems, they both have horizontal systems, and they both have decentralized systems. Now, and when we talk about structure, so I'm really against having just a megacity structure. I think I really have to have balanced urbanization. And both China has balanced urbanization, so does France. In fact, France started creating more balanced urbanization because an economic geographer wrote a book in the 1940s. It was called Paris and the French Desert. Paris was the only city whose territory was expanded. And France is a collection of tiny local government, literally tiny, So it had this tremendous advantage. Then it had the capital city advantage. So it was, so they decided that they were going to build up the rest of France.
you know. And so they started by creating, first they started that, in the service sharing system, originally it was one service, then it became multiple service. Then they realized that wasn't enough, so then they became a more general planning, development. On top of that, they had a national government body, and so does China. And China is the NDRC, and in France it's called Tatar. Then now they've evolved to another name. But basically, what its goal is to try and improve the territorial development in economies of their respective countries. It's really very interesting. It took two very different parts of it. Sorry, so what was the other question? I think you have answered both, because the Chinese model that you talked about, it talks about the economic ecosystem as well as I'm very impressed by the issue Chinese. of megacities. I think we all are. So now I think we are constrained by the Juma prayer thing. I think we'll have time for 2 or 3 questions. First is, who are interested, please raise your hands. Please introduce yourself. And if your question is directed to someone, please mention that. Sir, please, in the black. Can you? मेरा नाम कश्फ है और मेरा सवाल ये है जी कि since this is very important कि Namzis has initiated this discussion, but this is so unfortunate that we don't see any formal education in Pakistan for local government. I got this opportunity and I learned that there was a postgraduate diploma just happening in Punjab University, and it was also after 18 years. This also reflects that you will be the last of the dinosaurs, maybe advocating for the local government systems, because we the millennials also thinks कि ये होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं बात सुनते हैं, but when I see Gen Z, उनको तो पता ही नहीं होगा लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, उनको तो यही पता होगा ना DC साहब हैं. तो so my question is कि how important is the role of education sector? हमने डिबेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनी समझी किस तमाम हुकूमतें करना चाहती हैं. तो अभी जो केयर टेकर निज़ाम आया पंजाब में, उन्होंने आते साथ जो लॉ था उसको साइड लाइन क्यों किया? थैंक यू. मेरा नाम कश्फ है, मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ लाइफ एड लाहौर की. जी मिफ्ता साहब, आप इसको एड्रेस करना चाहेंगे सर, या डॉक्टर साहब, आप वली चीमा साहब? मिफ्ता साहब. I would also like to say some input on that. Okay. One thing is education. I want to mention that in the United States, the state that has the best financially managed local governments in the country is North Carolina, which is a southern state. And this southern state developed a system because their local governments really were the worst sufferers of municipal bond defaults during the Great Depression. They have the School of Government of the University of Carolina. It educates local and state officials, it advises them, and it informs them. And this is a constant process. And it's very transparent. And it's a very, I think you really have to have constantly training like that. So. दूसरे आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ. उन्होंने लॉ अलहदा कर दिया, आप लाइफ लाहौर है, आप और मैं जाके कोर्ट में इसको चैलेंज क्यों नहीं करते? हम ये क्यों चाहते हैं कि बादशाह खुद सब काम हमारे लिए करे? चलें इसको चैलेंज करें. वकील साहब यहाँ बैठे हैं. मैं just want to comment on that. इसमें वैसे एक सवाल जैसे आपने भी किया कि कोर्ट जाके, I will share my experience of going to the court. कोर्ट्स कितने वाइब्रेंट हैं हमें इंसाफ देने के लिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है. फिर अमार साहब उधर बैठे हैं. सर हमने, आई एम फॉर्मर मेयर कसूर जी, वी वर इलेक्टेड फॉर 5 years like you were saying, और हमें 2 साल बाद पीटीआई के इमरान खान साहब ने घर भेज दिया, जो लोकल गवर्नमेंट्स के सबसे बड़े एडवोकेट थे 2018 से पहले अपने मैनिफेस्टो में. Then we fought a war for 2 years. Yeah, we heard about it in the morning. जी.
कि हमने 2.25 करोड़ रुपए लगाए, हमने रिश्वतें नहीं ली, हमने हराम पैसा नहीं खाया, बट वी हैड टू स्पेंड 2-2.5 करोड़ रुपए सिर्फ इंसाफ लेने के लिए, उसमें 3.25 साल लगे, और जब हम रीइंस्टेट हुए उसके 1 महीने बाद हमें कहा गया थैंक यू वेरी मच, आपका टेन्योर खत्म हो गया आपका। अच्छा, बिगर एंड फनीएस्ट स्टोरी इज, इस तरह आप कह रहे थे, देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन द लोकल गवर्नमेंट्स। पिछले 23 साल में पहले ये तो डिटरमिन कर लें कि लोकल गवर्नमेंट्स थी कितनी है। 24 में से सिर्फ 9 साल, तो पहले तो 65% ऑफ द टाइम्स निकाल देते हैं। एक्सीलेंट क्वेश्चन। एसी साहब रहने वाले कोटली सतिया के, लगे हुए शालीमार टाउन, टेन्योर है 6 months का, why would he be interested in solving this? That is number one of all. Number two, there are examples in local governments where I was Mayor Kasur. I have served as Mayor Kasur for 2.5 years, but actually 2.25 साल। but उन 2.25 साल में हमने अपना TTIP रेवेन्यू डबल किया, आप अभी जाके चेक कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू डबल किया आफ्टर कंसल्टिंग ऑल ऑफ द स्कूल्स, पेट्रोल पंप्स, एवरीबडी on what is feasible। और आपने कहा कि 5% रेवेन्यू आता है आपके प्रॉपर्टी टैक्स से, अल्हम्दुलिल्लाह total 52% it's not just of property our tax revenue was only from one tax which is called TTIP, 1% of it। Problem however that exists is कि 19th grade का local government officer CO लगा हुआ है, 17वें ग्रेड के एसी साहब आके उसे कहते हैं ओए how dare you, why are the local government officers not responsible for their department when the elected side is not there? ACDC आ कहाँ से गए और किसने इख्तियार दिया कि लोकल गवर्नमेंट्स के सीओ घर बैठ जाएं, एक्सीएंस घर बैठ जाएं जो लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, और डीसी साहब एज एडमिनिस्ट्रेटर आके आ जाएं। एंड देन थैंक यू कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसके खिलाफ हमारी जो रेट थी फुल बेंच बना है, 3 जजेस अब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, डे टू डे हियरिंग हुई है, हमें इंसाफ नहीं मिला। आई जस्ट वांटेड इट। राणा साहब, थैंक यू फॉर योर कमेंट। इसमें जी सर, सर प्लीज। Inability of our judicial system, which has almost collapsed with what I believe as a lawyer. 37 petitions originally which we filed for the restoration and we challenged the law, and then during the pendency of those petitions we went to the Supreme Court and got our decision in our favor. Those 37 petitions are still pending. I just want to convey from this forum at least get rid of those 37 petitions. वो आ रहे हैं आज शाम को, आज शाम को आ रहे हैं। अभी आपके लिए सेशन आ रहा है जी। आई थिंक वी हैव टाइम फॉर वन मोर क्वेश्चन। I wanted to, it's not a question, but I wanted to inform the forum that the Punjab government with assistance from the Asian Development Bank currently is in the process of establishing a local government training academy. The building, I believe, is set up, and we are designing courses in collaboration with LUMS and with Al Jazeera Training, which is already training WASAs. We have these master trainer courses, and so the process is going on. The thing is that local government इस वक्त एक नई चीज़ है, तो ज़ाहिर है उसकी ट्रेनिंग भी आहिस्ता आहिस्ता ही होगी। जो चीज़ पहले थी नहीं, तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ से आनी है? तो the thing is that ahista ahista, it's a process of evolution, and the training will come. Secondly, this training will be made a mandatory part of the career progression of all employees of municipal committees in order to ensure that unke IT skills, unke data skills, all other skills are up to the mark, ताकि वो डिलीवर तो कर सके। मतलब यहाँ से सिफारशी बंदा, वहाँ से सिफारशी बंदा। इस वक्त तो म्यूनसिपल कमेटीज़ आर फुल ऑफ सिफारशी बंदे। So the thing is, they need to be trained. We understand this need, and the academy is there. The courses are being developed. I think that it should be functional maybe within a year. So yes, the government is looking into this. So ये आपका comment था। One last question, please, पीछे उधर दे दीजिएगा माइक। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ है जी। डॉक्टर साहब, अली चीमा साहब ने डिसफंक्शनैलिटी की जो बात की है, तो ये तो हमें पता चल गया कि रेवेन्यू जनरेशन अपनी नहीं है लोकल बॉडीज़ के पास, और उनको अवार्ड्स के थ्रू ही फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल जो भी इंडिपेंडेंस थोड़ी बहुत मिलनी है, डिसीजन मेकिंग होनी है, तो कम से कम उस अवार्ड को ही कोई मेरिट बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया जाए। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द लोकल गवर्नमेंट्स। अभी सुप्रीम कोर्ट की या जुडिशरी की जनरली बात हुई कि जुडिशरी के पास इतने केसेस पेंडिंग हैं, तो अगले साल जब उन्हें बजट मिलना है
अवार्ड होना है पैसा, उस वक्त क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने पिछले साल आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, क्या मैट्रिक्स थे, और उन मैट्रिक्स में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और आपका सम पोर्शन ऑफ योर अवार्ड इज गोइंग टू बी बेस्ड नॉट ओनली ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन और साइज दैट यू कैरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है. 50% आपको परफॉर्मेंस बेस पे मिलेगा. तो जो कंपटीशन की बात है, कम से कम कोई तो चेक आ जाएगा कि किसी के साथ compete नहीं भी कर रहे, अपनी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट तो compete कर रहे होंगे. तो सो किसी लेवल पे डिसफंक्शनैलिटी जो है इवन द एग्जिस्टिंग सिस्टम एड्रेस तो हो पाएगी कम से कम. Dr. Saab, Mr. Saab, Abdurrahman Saab, any one of you wants to? I think most of the points that have been made are very valid, and I don't think anybody in the panel can deny the wisdom and the urgency of all of these issues. तो ये अच्छी बात है, अब ये डिबेट हो रही है, बहुत से अब और भी हमारे दोस्त हम लोगों में से ज़्यादा सेंसिटाइज होंगे, और इंशाल्लाह जो भी हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है हर किसी का जो यहाँ बैठा हुआ है, इंशाल्लाह हम ज़्यादा आइंदा कोशिश करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करें. मगर आई थिंक बड़े अच्छे पॉइंट्स सारे रेज हुए हैं. I think Mr. Saab wants to say something and I'll let him have the last word because जुमे की नमाज का वक्त भी हुआ जा रहा है. जी, I wanted to just comment on a point raised by Ali Chima. वो जो बात कर रहे थे कि without revenues, of course, you can give them responsibility, but if they have no revenues, they are not able to do it. That's why I think that it's imperative actually कि हम जो NFC अवार्ड के पैसे हुकूमत देती है वफाक को डायरेक्टली 60% डिस्ट्रिक्ट्स को दे दे, जो मैंने गुजारिश की पहले, 20% डिविजन्स को दे और 20% सिर्फ प्रोविंसेस को दे, एंड देन दे आर एबल टू रेज देयर ओन टैक्सेस. उसके अंदर भी हमको ये देखना चाहिए ऑब्वियसली कि यू कैन नॉट कंपेयर कराची टू अवारान. सो अवारान को लेट्स से 90% तक हुकूमत दे दे पैसे उसके बजट के, लेकिन सब सिटीज लाइक कराची एंड लाहौर एंड ऑल दैट, they should not get more than 30 to 40% of their budget from the federal government or the provincial government, and the rest they should raise them by themselves. So उससे आपकी horizontal equity भी आ जाएगी, vertical equity भी आ जाएगी. और दो मैं समझता हूँ कि दो functions जो हैं वो वफाक को या सूबे को फंड करने चाहिए पूरी तरीके से, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन. बाकी जो फंक्शंस हैं, किसी ने रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, व्हाटएवर, उसके लिए वो थोड़ा सा जो है कम से कम कराची, लाहौर एंड अदर रिचर डिस्ट्रिक्ट्स should raise their own revenues, but poorer districts obviously, like I said, Avaran or Thar and Southern Punjab, they should be just given money. The other thing that जो इन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस बेस्ड पैसे दें, तो देखें वो कुछ वर्टिकल ग्रांट्स हो सकती हैं जो टाइड हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली आई थिंक द बेस्ट वुड बी टू लेट the voters decide whether the performance was good or not by electing or unelecting their mayors and commissioners and what have you. So elections जो है ना वो एक बड़े अच्छा audit होता है compared to most other things. तो वो अगर regular elections हो जाएं local government तो वो अच्छा होता है. And finally I want to say that जो बात मेयर साहब कर रहे थे, and I could hear him and Ali Chima very well जब ये passionate थे, क्योंकि they were very loud compared to the rest, जिसको मैं सुन नहीं सकता था सही. लेकिन जो वफाक की तरफ से या सूबे की तरफ से डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर आ रहे हैं, दैट्स नॉट लोकल गवर्नमेंट, दैट्स नॉट लोकल एम्पावरमेंट. जब तक लोकल लोग अपना एक बंदा इलेक्ट नहीं कर सकते तो ही लोकल एम्पावरमेंट होती है. ऊपर से बंदा भेजना इज जस्ट, उसकी आपने वहां पे कुर्सी रख दी है, लेकिन वो अगर रिस्पॉन्सिबल लाहौर पे है या कराची में है या कोयटा में है तो ही इज नॉट रियली अ लोकल गवर्नमेंट पर्सन. थैंक यू. मिस्टर साहब, सर हमारे पास एक्चुअली टाइम प्रोफेशनल स्मॉल कमेंट कि मिस्टर साहब ये जो आपने प्रोफेशनली यू हैव गिवन दिस ओपिनियन, या दिस इज द मैंडेट गिवन टू यू बाय पीएमएलएन आल्सो ऑन दिस इशू सर? सर ये मेरा खुद का ओपिनियन है. माय ओपिनियन समटाइम्स आर वेरी मच in line and sometimes very much against the mainstream political parties. Thank you जी. Unfortunately we'll have to conclude this very engaging discussion here. हमारे panelists का बहुत शुक्रिया और उससे ज़्यादा हमारी audience का शुक्रिया. You have been a very engaging audience. Thank you so much. And we have a small break and I think we reconvene at 2 for the third session of the local government forum. Thank you sir.